Welcome back. Today we start with Social Studies 6th chapter, and that is on demand. That some of the students they have this chapter in their first term. So let's start with it. Now, as such, we had already done with heritage in our first chapter. We had done natural heritage, we had done cultural heritage. Then in third chapter also we had moved ahead with some other forms of heritage. But here it will be in detail about various monuments that we are going to study about, like Taj Mahal, Sidi Said Nijali, and Ajanta Caves, Ellora, Elephanta, and churches of Goa and all. So these are all termed as cultural heritage. In short, heritage means that is carried forward from one generation to another. That each and every जनरेशन गवर्नमेंट या उस ज़माने के जो बहुत साल पहले के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इन हेरिटेज को संभाल के रखा. देन इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय द न्यू जनरेशन एंड देन द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टिल टुडे, टिल दिस डे वी आर लकी इनफ टू enjoy this heritage, to have a look at this heritage, to view this heritage, to visit these places of heritage, because it had been preserved. So its preservation, its conservation is of equal importance. Now natural heritage, as we had already done, was related to God gifts like rivers, mountain, valleys, ponds, wildlife, flowers, vegetables, etc. Cultural heritage is a heritage that is created by man, right? So let's see. The cultural heritage of India is very rich and prosperous. India as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे कंट्री के हेरिटेज को व्यू करने, to visit these places of heritage, not only natural but also cultural heritage of a country. In this chapter, let's study about these various places. So your 2 mark or 3 mark or short note starts from your Caves of Ajanta. The famous caves of Ajanta located in Aurangabad district near Ajanta village. They are important from point of view of art of Vastu. These caves are divided into 2 divisions. One is based on wall painting and the other is based on sculpture, कि पत्थर में से मूर्ति बनाना. तो इन केव्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. एंड एक वो केव्स थे जिसमें वॉल पेंटिंग्स थे और एक वो केव्स थे जहाँ पे मूर्तियाँ बनी थी पत्थरों में से, स्कल्प्ट की गई थी, कार्व की गई थी. Caves of number 1, 2, 10, 16, 17 have excellent wall paintings and have achieved, that is attained, the highest rank in wall painting. The theme of this wall painting is Buddhist religion. अब ये वॉल पेंटिंग में मेन उन्होंने बेस क्या लिया था, दैट इज बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बताया गया है इस पेंटिंग थ्रू. अजंता केव्स आर डिवाइडेड वंस अगेन इनटू 2 कैटेगरीज, चैत्यस एंड विहारास. Cave number 9, 10, 19, 26, 29 are Chaityas, which we already had done in a chapter 1. ये सारे धर्मस्थल हैं, ऐसी जगह जहाँ पे ऋषि मुनि आके रुकते थे. और इन नंबर्स के अलावा बाकी के जो केव्स हैं वो विहारास हैं. अजंता केव्स वर फॉरगॉटन एज द पैसेज ऑफ टाइम. तो लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे. बट इट सो हैपन कि 1819 में इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड देम. मतलब ऑलरेडी अजंता केव्स तो थे ही, लेकिन क्या होता है लोग भूल जाते हैं, ये चीज़ें कहीं पे छूट जाती है. इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी था ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पेन विथ यू, अब वो पेन कहीं पे खो जाती है, राइट? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भाई कभी वो पेन थी ही नहीं तुम्हारे पास, लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई. नो, इट्स नॉट दैट. पेन थी, कहीं पे रख दी गई है भूल से, या कहीं पे छूट गई है, या उस तरफ इंटरेस्ट नहीं जा रहा तो कहीं पे कोने में पड़ी है. अब अचानक किसी ने एक दिन बिड़ा उठाया कि चलो ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते क्या मिला, पेन मिल गई, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेस्टिजियस. इस तरह से
रीडिस्कवर किया गया, राइट, अजंता केव्स को बाय इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ इन 1819. Ajanta caves are magnificent example of initial Buddhist art of Vastu, art of painting and sculpture. Human interference and impact of time have greatly damaged them. अब हम लोग इंटरफियर तो सब में करते ही रहते हैं. कोई दो लोग बात करते हैं तो इंटरफियर करते हैं. किसी का फ़ोन आया तो इंटरफेरेंस है, मम्मी किसका फ़ोन आया, बेल बजी तो है मम्मी कौन था. यू नो वी आर ऑलवेज दैट पैटर्न वी हैव फॉर्म्ड इन अ लाइफ इज ऑफ इंटरफियरिंग. अब यही हमने किया नेचर के साथ, यही किया हमने कल्चरल हेरिटेज के साथ. लोग बेचारे बनाने वाले तो बना के चले गए ऊपर, उनको थोड़ी ना पता था कि हमारी बात की जनरेशन कैसी पैदा होने वाली है. जो इंटरफियरेंस ज़्यादा करेगी उनके अच्छे से संभाले हुए काम को, वो तो बेचारे अच्छा खुद बना के चले गए. हमने इंटरफियर किया, ख़राब किया, वी मेड इट डर्टी, वी मेड इट पिकनिक स्पॉट्स मैनी अ टाइम. People started carving their love on the pillars of various monuments and drawing that heart and that arrow passing through the heart. My God, क्या कुछ नहीं बनाते हैं लोग ऐसे हिस्टोरिकल साइट पे, जैसे खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो. घर में तो हार्ट ड्रॉ करेंगे नहीं, घर में हार्ट के थ्रू एरो भी नहीं घुसाएंगे, राइट. कहीं पे वॉल पे किया है कभी ऐसे, बट यही लोग बाहर जाके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं बाई ड्रॉइंग दैट बिग हार्ट एंड दैट एरो जूम करके पास हो रहा है वहाँ से. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस. एंड अगेन टाइम, यस, टाइम की भी तो असर होगी इन चीज़ों पे, चीज़ें डैमेज होने लगी. अजंता केव्स आर फेमस नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच आर्ट, द फाइन मिक्सचर दैट इज ब्लेंडिंग of wonderful art of painting, sculpture, architecture of Ajanta caves have earned pride for Indian art. Now things to know, very important. Chaityas means temple halls for Buddhist monk. जो हमने आगे किया कि चैत्यस और विहारास, few groups are of caves are chaityas, some caves are viharas. तो चैत्यस क्या है, बड़े बड़े टेम्पल में हॉल्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए. स्टूपास आर बिल्ड इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स. नाउ व्हाट इज स्टूपा? स्टूपा एक बुद्धिस्ट के लिए मंदिर माना जाता है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स रखे जाते हैं एक बॉक्स में, लोग उसकी पूजा करते हैं. और विहारा मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव एंड स्टडी. नाउ एलोरा केव्स. Ellora caves also are located in Aurangabad district in Maharashtra. There are 34 caves in all. There are 3 groups of cave temples. They are different from each other. 1 to 12 are Buddhist caves. 13 to 20 are Hindu. 30 to 34 are Jain caves. And Hindu caves are built during rule of Rashtrakuta dynasty. तो अब ये इनको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया. टोटल 34 है. पहले 12 है बुद्धिस्ट केव्स, फिर हिंदू धर्म के ऊपर है और फिर जैनिज़्म के ऊपर. हिंदू केव्स जो बिल्ड हुए दे वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा राजास डायनेस्टी. कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन केव नंबर 16. इट इज 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड, 30 मीटर हाई. दिस टेम्पल इज carved out of a huge massive rock, big single massive big rock, single rock. This temple is decorated, that is adorned with beautiful doors, balconies and many pillars. Beauty of the temple cannot be described in words. They are constructed during the time of 600 to 1000 AD. It's a live display of ancient Indian civilization. Caves dedicated to Hindu, Jain, Buddhist religion. तो all these caves देखो 3 धर्म के related हैं, Buddhist, Hindus and Jain. Ellora campus is not only an excellent example of magnificent art of creation of art, but also best example of excellent technology. तो ये जो एलोरा कैंपस है पूरा, एलोरा केव्स जो है वो सिर्फ एक आर्ट का क्रिएशन का एग्जीबिशन नहीं है या एग्जाम्पल नहीं है, इट एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. मोर एक्सलेंट टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स. मोर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस. इट टुक देम
years and years and years to complete it, right? It was not 1 day, 2 day और 4-5 years का काम. तो इंडियंस के पेशेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे. Elephanta caves. These caves are located in Arabian Sea, 12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. There are total 7 caves in all. There is a huge stone monument of an elephant. On seeing this structure, Portuguese called it Elephanta. क्योंकि एलिफेंट का मॉन्यूमेंट था बड़ा स्टोन का, तो वहाँ पोर्टुगीज जब पहली बार आए तो उन्होंने नाम दिया एलिफेंटा उस जगह को. Many beautiful figures have been carved out of them. The magnificent Trimurti temple, Brahma, Vishnu, Mahesh, in cave number 1 is the best example of sculpture. In 1987, UNESCO has placed Elephanta cave in the list of World Heritage. वहाँ के जो लोकल लोग हैं फिशरमैन, वो इस जगह को कहते हैं धारापुरी, राइट? सो नेक्स्ट, सो up till here we have seen that how Elephanta cave is known as by which particular name, that is by local fishermen it is known as Dharapuri. Now the next one is Mahabalipuram. Now all will be once again your like short notes, right? So Mahabalipuram is located 60 kilometers away from Chennai, and this city of Tamil Nadu is famous for its splendid, there is great temple architecture and seashore, of course. Narasimhavarman I, who was popularly known as Mahamalla, he belonged to Pallava dynasty. Learn it all for your one marker. 7 chariot temples were built here. At present only 5 could be seen because they believe that 2 chariot temples have submerged in the ocean, and there is a great figure, an amazing figure, beautiful figure of Lord Vishnu in a smiling pose. Beside this there is idol of goddess Durga. Slaying मतलब मारना, slaying महिषासुर is worth noticing, मतलब देखने लायक है ये. Mahabalipuram, which has an unparalleled architectural rock sculpture, मतलब महाबलीपुरम का जो रॉक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल वर्क है, वो किसी के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. इट इज़ दी बेस्ट, एंड ऑल्सो इट वॉज अ फेमस हार्बर ऑफ एंशियंट टाइम, राइट? Then as you see that Pattadakkal Memorial. Now Pattadakkal Memorial, that is 16 kilometers, it is away from Badami Nagar, that is a capital of Chalukya dynasty, 60 kilometers away from Badami Nagar, and Dravid from Badami. And Nagar and Dravid, अब यहाँ पे आ जाएगा full stop. Nagar and Dravid style of architecture is seen in the temple construction over here. So once again, Pattadakkal is the capital of Chalukya dynasty, 60 kilometers away from Badami. Nagar and Dravid style of architecture is used in this temple construction over here. These were built during the 7th and 8th century. And Virupaksha is the biggest temple in Pattadakkal, right? Now as we move to the next part, let's see that's related to temples of Khajuraho. Now temples of Khajuraho, that is, you can see these temples are located in a small village named Khajuraho at Chhattarpur district of MP. And तो ये खजुराहो टेम्पल बनाए गए थे एक छोटे से गांव में, and a small district of MP. Khajuraho was the ancient capital city of Chandela Rajput of Bundelkhand. So temples were built by this king during their rule 950 to 1050 AD. आज सिर्फ 25 टेम्पल यहाँ से एग्जिस्टेंस में मतलब दिखाई देते हैं. जैसे लाइक आगे हमने किया कि 7 टेम्पल्स थे लेकिन 2 सबमर्ज हो गए, 5 ही है. उस तरह से यहाँ पे 25 टेम्पल अब एग्जिस्टेंस में हैं. मोस्ट ऑफ देम आर शिव टेम्पल, वेर सम ऑफ देम आर वैष्णव, सम आर जैन, लेकिन ज़्यादातर शिव टेम्पल्स हैं, राइट? एंड दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर. फिर वेरी इंपॉर्टेंट 64 योगिनी टेम्पल्स ऑल्सो आर द मेन टेम्पल. द तोरण, मतलब हमने स्टार्टिंग में किया था तोरण, मतलब इफ़ यू रिमेंबर वी डिड इन अर्लियर चैप्टर्स ऑफ आवर हिस्ट्री कि तोरण अगर हम कहें तो तोरण मतलब जो अब दिवाली में, नवरात्रि में हम जो
तोरण लगाते हैं आसोपालों का एंट्रेंस ऑफ द डोर, एंट्रेंस डोर पे, घर के एंट्रेंस के दरवाजे पे, कभी वॉशरूम के दरवाजे पे नहीं लगाते, कभी किचन की विंडो पे नहीं लगाते, चौकड़ी के दरवाजे पे नहीं लगाते, इट इज़ ऑलवेज एट द एंट्रेंस डोर, राइट। तो उससे हम कहते हैं एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज कॉल्ड तोरण। अब वहाँ पे ये फुलहार लगाना स्टार्ट किया तो उसका नाम दे दिया हमने तोरण। इट इज़ यूजुअली आर्क शेप। आजकल न्यू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फॉर्म एंट्रेंस होते हैं ट्रायंगुलर या स्क्वायर या वॉट नॉट, बट यूजुअली एंट्रेंस ऑलवेज यूज टू बी इन एन आर्क फॉर्म. So the arc of the temple is the best example of ornamental style of architecture, and all of these temples were constructed with granite stone. अब ग्रेनाइट तो पता ही है, जैसे कि हमारे किचन का प्लेटफॉर्म, सो स्टर्डी स्ट्रॉन्ग, हाथी भी बैठे उस पर तो टूटे नहीं, राइट. ब्लैक कलर का रहता है ग्रेनाइट, ग्रीन कलर का भी रहता है. वी मेक यूजुअली यूज ऑफ ब्लैक कलर. तो ये सारे टेम्पल्स में ज़्यादातर ग्रेनाइट स्टोन यूज़ होता था कंस्ट्रक्शन के लिए. खजुराहो टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड द विजिटर. स्पेल बाउंड मतलब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टॉनिश्ड द विजिटर्स. इट वॉज सो ब्यूटिफुल कंस्ट्रक्शन, राइट. Now, Sun Temple of Konark, again you are very important. It is located near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. Constructed in 13th century during the rule of King Narasimhavarman I. He belonged to Garg dynasty. This chariot temple, drawn by 7 horses, took the form of the chariot of sun god. Now, very important learn is 7 horses, 12 big wheels, providing beauty to the pedestal of the temple. Pedestal, that is, हमने कहा है एक raised portion, that is called the pedestal. These wheels reflect 12 months of the year. Each wheel has 8 spokes. और ये भी हमने ऑलरेडी क्या कर दिया था स्टार्टिंग में कि 8 प्रहर होते हैं. इन 1 डे देर आर 24 hours. इन 1 year 12 months. बट इन 1 day देर आर 8 प्रहर, 8 पार्ट, 8 periods ऑफ अ डे. सो वंस अगेन लेट्स रिकॉल. वैसे तो कईयों को तो याद होगा ही, बट नहीं याद है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. दैट इज बिफोर सन राइजेस, दैट्स कॉल्ड डॉन, DAWN, राइट. देन सन राइजेस, दैट्स मॉर्निंग. देन देर इज, यू विल सी, नून 12 बजे, आफ्टरनून 12 बजे के बाद. देन देर इज सन सेट, मतलब कि अंधेरा होने के पहले का टाइम पीरियड, सनसेट, डस्क पीरियड. देन देर इज नाइट, राइट. तो सनसेट के पहले का टाइम, फिर सनसेट के बाद का टाइम, देन देर इज नाइट, एंड देन देर इज मिडनाइट. तो इस तरह से होते हैं हमारे 8 parts of a day. And details of motif, मतलब जो एक you can see over here the motif like जो एक पैटर्न बनाते हैं व्हील में. तो this motif and subject diversity of this temple is unparalleled. And this temple has been built by black stone, so it is called Black Pagoda. Pagoda मतलब temple. In Orissa it is called Black Pagoda. This remains reflect the sculpture and civilization of 13th century Orissa. Now Brideshwar temple. Brideshwar temple is located at Thanjavur in Tamil Nadu. It was built during 1003 to 1010 AD. It is a Shiv temple, just so it is called Brideshwar. And it is even you could see, you could be asked for one mark why it is called Brideshwar, because it is Shiv temple. And it was built by Rajaraja I king of Chola dynasty, and it is called also as Rajrajeshwar temple. The height of this temple is 500 feet, 250 feet width, spread in a huge area surrounded by wall. A summit, that is the topmost part, is 200 feet high above the ground. Hence, this temple has achieved the place in the temple of high pinnacle. Pinnacle, that is the topmost part of the temple, जहाँ पे ध्वजा फरकती है. This is a marvelous temple and it's a marvelous heritage of architectural art of India.
due to its beautiful, its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. In the same way, it has secured an important place among the best temples of South India also. तो बृहदेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस है क्योंकि उसके पिनाकल की जो साइज है वो ह्यूज है, आर्किटेक्चरल आर्ट वर्क है जो मार्वलस है, आर्टिस्टिक डेकोरेशन वर्क है, एंड साउथ के टेम्पल में तो ये बेस्ट माना जाता है, एंड इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. कुतुब मीनार, मीनार मतलब पिलर, तो कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली. ये तो सबने देखा भी होगा. बिल्ड इन 12th century by Qutbuddin Aibak, who was the founder of Ghulam dynasty or Ghulam rule. After his death, remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. This 72.5 meter tall skyscraper, मतलब कि skyscraper मतलब very tall building, is made out of round red stone and marble. Circumference is 13.75 at the base. यहाँ पे down नीचे है 17.5 and is reduced to 2.75 as you move towards the top. एंड वर्सेस ऑफ कुरान मतलब जैसे हम कहते हैं हमारे श्लोक एंड ऑल, वैसे उनके कुरान के जो वर्सेस है, इट हैज़ बीन एंग्रेव्ड ऑन दिस पिलर्स एंड दिस द टॉलेस्ट स्टोन पिलर और minaret ऑफ आवर कंट्री. नाउ Hampi. This town is located on the bank of river Tungabhadra of Hospet in Bellary district of Karnataka. Hampi was the capital city of Vijayanagar kingdom. रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम व लवर्स ऑफ आर्ट. अब ये तो सबको पता है, हमने पहले भी किया था कि विजयनगर के राजा संस्कृत लिटरेचर में भी आ गए. ही लव्ड आर्ट, क्राफ्ट, लिटरेचर, एवरीथिंग, एंड ही वॉज अ पोएट हिमसेल्फ. तो विजयनगर के किंगडम के जो राजा महाराजा होते थे, दे वर द लवर्स ऑफ आर्ट. तो उन्होंने अपने रीजन को बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्चरल वर्क से डेवलप किया and they made it beautiful. Peculiar type of architecture was developed in Vijayanagar kingdom during their rule. The period of Krishna Dev Raya was said to be the golden period of art as it reached to its highest peak. कृष्ण देव राय राजा के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचे वो, मतलब कि मैक्सिमम अगर आर्किटेक्चरल और आर्ट का वर्क हुआ तो इस राजा के टाइम पीरियड में. तो दैट पीरियड ऑफ कृष्ण देव राय इज सेड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars. तो यहाँ पे मेन फीचर क्या था, सबसे एक अलग खासियत क्या थी यहाँ की, कि बड़े बड़े पिलर्स बनते थे, ह्यूज पिलर्स बनते थे, ब्यूटीफुल पिलर्स, और ये बनते थे स्टोन में से. पिलर्स एंड कॉलम्स मेड विथ आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड with figures of God, goddesses, human, animal, warriors, dancers. In Hampi village of Vijayanagar kingdom during the rule of Krishna Dev Raya, Vithala temple and Hazara temple were built besides it. Virupaksha temple, Achyutaraya temple of Lord Krishna, the best example of architecture. Then comes Humayun's tomb, very important tomb marker. Tomb of Humayun at Delhi is the best example of Mughal architecture. After the death of Humayun, it was built by his wife, that is Queen Hamida Begum. This tomb was made in Iranian style of art. Red and white stone was skillfully used in its construction. Fort of Agra. Fort of Agra is in the Agra city of UP, made of red stone. Hence it is known as Red Fort, built by Akbar in 1565. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art. मतलब यहाँ पे इसके फोर्ट ऑफ आगरा के कंस्ट्रक्शन में हिंदू आर्ट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट भी दिखाई दे रहा है. फोर्ट है 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference, right? And it could be, you could also see that the 70 feet tall wall, 1.5 mile circumference, and red stones are skillfully embedded, that is fixed on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall. Jahangir Palace was built by Akbar in this fort. Architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. Shah Jahan has spent his last days of his life in this fort. Now, Taj Mahal. Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river and Yamuna, that is of course not written over here, but it's on the bank of river Yamuna. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world that all must be knowing. Constructed by Mughal king
Shah Jahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1630. After her death, the construction of Taj Mahal started, and in 1631. It was completed in 1653. मतलब nearly 20-22 साल लग गए बनाने में. शाहजहाँ यूज एक्सपर्ट इंडियन स्कल्प्टर्स बिसाइड्स, मतलब इंडियन स्कल्प्टर्स के अलावा ईरान से मंगवाए गए थे स्कल्प्टर्स, अरेबिक, टर्क से, यूरोपियन स्कल्प्टर्स, आर्टिसंस, अलग अलग कंट्री से, हर पूरी दुनिया से दी बेस्ट आर्टिसंस एंड स्कल्प्टर्स वर कॉल्ड एंड दे वर ऑल्सो एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल. ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूम. टूम मतलब कब्र. तो ये मुमताज महल है, मतलब कि कब्र थी उनके वाइफ की, but beautifully decorated and made. So Taj Mahal is said to be one of the best tomb of the world. Due to this tomb, the name of Mumtaz Mahal became immortal. Immortal मतलब लोग आज जन्म तक याद रखेंगे उसे. Mortal मतलब जो मर जाते हैं, immortal मतलब जो नहीं मरते, तो उनका नाम कभी मरता ही नहीं, लोग हमेशा याद रखेंगे उन्हें. This was the innermost wish of Shah Jahan also. Building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south. And the grave of Mumtaz lies in the center of Taj. It is surrounded by beautiful artistic octagonal fence. Octagonal तो पता ही होगा how many side, and is carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arcs. Pious, that is pure, holy hearts are welcome in this garden of paradise. Architecture of Taj glorifies the rich heritage of India, and the grandeur, that is the greatness of Taj, attracts thousands of people every year. Right? So next we move on to the Red Fort. Okay, so as I told you just now, that we now move ahead with a new topic, and that's Red Fort. Now Red Fort, as you all know, and many of you must have visited also, is located at Delhi, built by Shah Jahan in 1638 AD and made of red stones. Now Shah Jahan founded a city over here and he named after his own name. मतलब इस सिटी जो उन्होंने फाइंड आउट की उसको उन्होंने खुद ने अपना ही नाम दिया, शाहजहानाबाद, राइट, इसी फोर्ट के अंदर. एंड दिस फोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल. Diwan Khas is more beautifully, more detailed form decorated than the other buildings, and is decorated with a mixture of, that is amalgamation of gold and silver, fitted with precious stones. And other buildings of Red Fort are Rang Mahal, Aina Mahal, Lahori Gate, Meena Bazaar, Mughal Garden, etc. And these are the center of attraction of Red Fort. Peacock Throne is the best example of the extraordinary creation of this fort, right, which Nadir Shah took along with him to Iran. So that's your one marker, very important. Red Fort is one of the outstanding buildings, extraordinary you can say, among the Mughal art of architecture. Every year national flag is hoisted on the Red Fort on national festivals. Now Fatehpur Sikri, Fateh matlab victory, right? Now, it is 26 miles away from Agra in UP, and Akbar also, he had founded this city in the memory of Sufi saint Sheikh Salim Kishti. He made it his own capital city. The building construction of Sikri was started in 1569, completed in about 4 years, that is by 1572. And the best building among them are Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Palace of Turkey Sultan, Jama Masjid, Buland Darwaza. Buland, that is very big, very wide, very huge. That is called Buland. So Buland Darwaza of Fatehpur Sikri is 41 meter wide, 50 meter high. The other well-known and remarkable buildings of Sikri are Palace of Jodhabai, Panch Mahal, Tomb of Sheikh Salim Kishti, Diwane Am, Diwane Khas, Jyotish Mahal. Then churches of Goa. Now why Goa is famous for? So Goa is famous, of course, is famous for its beaches. Apart from that, there are churches, right? So there's the heritage. The Christian missionaries came to India, that you all know, you already had done in your 8th standard, 9th standard. Now this Christian missionaries means the one who comes with a mission. कोई एक ध्येय को लेके जब आगे बढ़ते हैं, मिशन को लेके, तो क्रिश्चियंस का एक मिशन था
to spread Christianity all over the world. They came to Portuguese with the same mission, with the same goal. तो ये Christian missionaries जब इंडिया आए they came to India with the Portuguese to spread Christianity. Now, Goa was the capital of Portuguese. Many churches were built over here in Goa. Church like Basilica of Bom Jesus, Basilica of God Jesus are in old Goa that many of you must have already seen. Relics. Now relics matlab remains. The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a church of Goa. His dead body is not yet decayed even after so many years. That is what people believe. Besides, there are many churches in Goa and it's well known for its beautiful beaches and artistic churches. Then we move on to very beautiful place very close to Ahmedabad, and that's Champaner. Now it's located at the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmal district of Gujarat, about 2 to 3 hours away from Ahmedabad city. After the victory of this place Champaner, Mohammad Begara gave it the position of capital. अब ये टाउन को जीतने के बाद महमूद बेगाड़ा ने उसे कैपिटल बना लिया, नाम दे दिया महमदाबाद. And Moti Masjid, Jama Masjid, historical fort are the different building you can see over here. It's a historical place. Considering art of architecture and historical importance of Champaner, UNESCO has declared this town as a site of World Heritage. तो UNESCO ने इसे नाम इसको इंक्लूड कर लिया वर्ल्ड हेरिटेज में, राइट. नाउ गुजरात में कौन से कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस है, लेट्स सी, जो शायद यहाँ पे गुजरात में रहने वाले काफ़ी लोगों को भी नहीं पता होगा. एंड आई कुड ओनली रिक्वेस्ट यू कि यू कैन मूव आउट एंड सी ऑल दिस ब्यूटिफुल प्लेसेस बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स. But yes, you can move out and see these beautiful temples and forts and मतलब कि वर्ल्ड घूमने के पहले एटलीस्ट गुजरात का जो हेरिटेज है वो देख लो. देन सी वेरियस हेरिटेज प्लेसेस ऑफ इंडिया itself, see the beauty of India rather than moving out and मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि दूसरी कंट्रीज़ नहीं देखनी चाहिए, बट वाई leave your own country and jump over to the other country's beauty. First, digest your own country's beauty, enjoy it, see it, and 10-15 साल उसी में निकल जाएंगे तुम्हारे लाइफ के. नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया को पहचानने में, समझने में, उसकी ब्यूटी को देखने में इट विल टेक years, long years, right? Then after 10-20 years you can move on to the other country, right? So beautiful heritage, of course. Gujarat, of course, this is what you can at least see now. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. सबसे आगे गुजरात हमारे कंट्री में from the point of view of architecture, art, sculpture. Many beautiful architectural sites can be seen here. For example, cave architecture we can see, temples, forts, stepwells, arcs, that is wow. Then let's know about all these cultural heritage places of our state. Dholavira and Lothal. Now again most of you must have been over here. Now Dholavira and Lothal were the main cities of Indus Valley civilization, which we already had done in our first chapter also. Dholavira is located at Khadribet at Bachau Taluka in Kutch district. थोड़ा बहुत हमने आगे जाके सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे हेरिटेज के बारे में हमने लर्न किया है. एंड Dholavira is also known for its ideal, that is best town planning, whereas Harappan culture was famous as a center of trade and commerce, that is business. तो Dholavira क्यों famous है? For its best town planning, और Harappan culture famous for its business. 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shell, that is small units, were found at Dholavira. तो बहुत सारे 5000 साल पहले के जो फैक्ट्रीज थी मोती बनाने की, बीज बनाने की, ऑर्नामेंट्स बनाने के, शेल्स मतलब कि जो छोटे यूनिट्स थे, वो सारी चीज़ें ढोलावीरा से मिली थी हमें. एंड लोथल इज लोकेटेड नियर अहमदाबाद. भावनगर हाईवे इज एन ऑल्सो एन आर्किटेक्चरल प्लेस वेरी फेमस, विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ अगेन बिजनेस, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड बेस्ट फैसिलिटी क्या थी यहाँ पे? पोर्ट. It is well facilitated port of Harappan culture in ancient time. अब Junagadh. In Junagadh, stone inscription of Ashoka, Buddhist caves of Khapra Kodia, wow.
That is Stepwell, not wow. It is wow. That is Stepwell. And Old Raj Mahal, Navgarh Well, Tomb of Mohabbat Khan, Tomb of Bahauddin Wazir, etc. Places are worth seeing. Bhavnath Fair is held over here at the foothills of Girnar on Mahashivratri. Yes, beautiful Ahmedabad. And this is also, I bet कि अहमदाबाद में जन्मे हो तुम लोग, अहमदाबाद में इतने साल से रह रहे हो, लेकिन अगर इसमें तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो अगर इफ़ आई वुड आस्क यू वुड से अच्छा ये अहमदाबाद में है, हमें तो पता ही नहीं, या सुना है लेकिन देखा नहीं है, राइट? कौन देखे, टाइम ही नहीं है. वी आर सो बिजी पीपल एंड नाउ दैट कोरोना एंड ऑल, तो कौन जाए बाहर. बट डियर, even before corona just entered, it's just few months back, उसके पहले भी ये चीज़ें यहीं पे थी अहमदाबाद में, and you could have easily watched it instead of Sunday to Sunday going to every time a new restaurant and हज़ारों रुपए कोई रेस्टोरेंट पे उड़ाना, या फिर मूवी देखने चले जाओ बड़े बड़े like bucket full of popcorn and thumbs up and samosas and all this thing, enjoying in the movie theaters and all. तो इससे अच्छा कि तुम चले जाते कहीं ये सारी चीज़ें देखने अहमदाबाद में, तो अब एटलीस्ट यू कैन गो एंड वॉच इट आउट. सो अहमदाबाद कुड बी नोन एज हिस्टोरिकल सिटी. फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोज़ा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, हाँ ये सब ने देखा होगा. शेकिंग मीनारेट, दैट इज झुलता मीनारा, सीधी सैदी जाली, temples of Fateh Singh, Mosque of Queen Rupmati are worth seeing architecture of Ahmedabad. And the Shaking Minaret outside Sarangpur Darwaza and Raipur Gomtipura famous for its unsolved secret of vibration. आज भी वो secret unsolved ही है कि भाई क्या राज है इनके वाइब्रेशन का. झूलता मीनारा, मीनारा मतलब पिलर्स, झूलता मतलब स्लाइट मूवमेंट, वाइब्रेशन होना. तो ये सीक्रेट अभी तक अनसॉल्व है, राइट? एंड इट इज़ सेड कि अब ये पिलर्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक नहीं थे, बहुत दूर दूर के एरिया में बनाए गए थे. झूलता मीनारा एक तो रेलवे स्टेशन के पास है, अहमदाबाद स्टेशन, एंड एक मीनारेट में अगर हमारे लोग जब कुछ मैसेज भेजते तो दूसरे मीनारेट में वो सुनाई देता. Britishers tried a lot to find out how it happens, but ये सीक्रेट उन तक नहीं पहुंच पाया, उनको पता ही नहीं चला कि ये कैसे कर रहे हैं हम लोग. So it is even today unsolved. And Sidi Saidni Jali is famous for his vegetation and geometrical creation and minute, that is very small carving. Here you can see Patan, Shastraling Lake in Patan, Stepwell of Rani, that is Rani Nivao, Stepwell of Queen and Rudra Mahala of Siddhapur are worth seeing architecture. The ruins of Rudra Mahala in Siddhapur suggest the greatness of palace which is located 26 kilometers away from Patan. This is a beautiful place you need to go and enjoy. Udaymati, Queen of Bhimdev I, built this stepwell to provide water support, and that is to cater the need of water to her subjects, that is public, which is known as Stepwell of Queen, Rani Nivao. UNESCO included this vow as a World Heritage Monument in 2014, and this stepwell indicates the beautiful arrangement of water harvesting. जैसे हमने 11th चैप्टर में किया, मैंने वीडियोस भी भेजे थे, व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग. तो ये तब ज़माने का वाटर हार्वेस्टिंग था कॉमन पब्लिक के लिए, राइट, फॉर पब्लिक यूजेज इन एंशिएंट टाइम. सिद्धराज जयसिंह built a lake called Shastraling Lake in 1140 AD. Apart from this, fort at Vadnagar, Sharmishta Lake, Kirti Arcs are worth seeing monument. Arcs are created on two erected pillars, मतलब दो पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर एक आर्क शेप बना देते हैं, like a bow. And Shamlaji temple located on the bank of Meshwar river is an ancient place for pilgrimage. Learn it, very important. Shamlaji temple located on the bank of Meshwar river is an ancient place for pilgrimage. This art of architecture is beautiful, marvelous. Many stupas and viharas were built in Gujarat during Kshatrap period. Remains of Buddhist stupas are found from Bodh Devi of Junagadh district, Dev Nimori near Shamlaji, Itva stupa in Girnar near Junagadh,
Besides these, many architectural work of Devni Mori, Baupyara, Upperkot, Khapra Kodia, Khambaliya, Talaja, Sana, Dhank, Jinjurijar, Kadiyadungar are seen in our state, Gujarat. Now, things to know, very important, learn it. Vav is a well with steps having 1, 2, 3, 4, 3 openings and 3, 6, 9 or 12 floors तक तुम नीचे जा सकते हो. If you must have been to Adalatni Vav, you must be knowing that you go down how many floors. Nanda, Bhadra, Jaya, Vijaya, the main types of stepwells. Stepwell of Adalatni Gandhinagar, stepwell of Queen of Patan, Adikadini Vav at Junagadh. Apart from this, Nadiyad, Mehmdabad, Umred, Kapadwan, Vadwan, Kaleshwari, Mahisagar district, etc. the examples of Vav architecture. There are many Jain temples on Shatrunjay mountain also at Palitana in Bhavnagar district. Many of you must have seen this place also, and Palitana and all. And few of the temples were built in 11th century. Taranga Pilgrim is located on the hills near Timba village at Kheradu Taluka and Mehsana district. Temple of Taramati is also located here. Somnath temple at Gir, Somnath district, and Dwarkadish temple of Devbhumi. Dwarka has gorgeous, that is beautiful historical heritage. List of Gujarat cultural heritage has not been completed yet. Many such places are there in Gujarat which makes our cultural heritage rich and prosperous. Then South Indian temples of ancient art and ancient India. Temples of South India are famous for their different style. They were made in Ravi style of art. They are in pyramidal shape that is triangular shape with multi-storied. One attractive stone is placed on its top. Now let's see. Many of the South Indian temples that were built in ancient time are given as below. Learn it. Name of the temple and place. Mahabalipuram in Tamil Nadu, Kailash temple Tamil Nadu, Brideshwar temple Tamil Nadu, at Thanjavur, this is at Kanchipuram, this is at Mahabalipuram, Virupaksh temple Pattadakal Karnataka, Parashurmeshwar temple Bhubaneswar Orissa, Vaikunth Perumal temple Kanchipuram, Tamil Nadu. Now in India all over, if you go to see which are the places of pilgrimage. India has been a land of pilgrimage in ancient time that we all know. अब तक इतने सारे हेरिटेज के अलग अलग जगह के हमने जो चैप्टर्स किए, तो अब तक तो पता चल ही गया होगा अबाउट द ब्यूटीफुल इंडिया and India, a land of natural heritage, cultural heritage, a land of pilgrimages in ancient time. People of India go on pilgrimages, and the journey of Char Dham, you must have heard, is so famous. 12 Jyotirlings include Badrinath and Rameshwar in Tamil Nadu, Dwarka in Gujarat, Badrinath is in Uttarakhand, Jagannath Puri in Orissa. More of a pilgrimage of 51 Shakti Peeth and Amarnath Yatra is said to be one of the most important. Girnar, that is Lili Parikrama, Shatrunjay Pradikshina, Narmada river ki Pradikshina, matlab gol gol ghumna, have great importance. India is a treasure house of rich cultural heritage. In this way, places of Indian cultural heritage has given unique identity in the world to India. तो इंडिया को एक अलग पहचान मिली है because of our cultural heritage that we have preserved up till now. And this accelerates, means it increases our economic benefits, our monetary advantages. हमारी country economically rich हो रही है, and so this accelerates economical benefits of accelerated economic benefits of tourism of India. So need not write 2 times accelerated economic benefit, just write only 1 time in your own words that this accelerates the economic benefits of tourism industry in our country. So learn this. 32 monuments of Indian cultural and national heritage have been included in the World Heritage Site by UNESCO. Okay? So any query, give me a call. And still one more chapter for the students to be provided, and yes, we will be forwarding you. सबको तो exams है नहीं, but some schools have exams like Loyola and all. तो हम आपको सभी के लिए हम आपके जो चैप्टर वाइज जो सारे टेस्ट पेपर्स हैं, यूनिट टेस्ट पेपर्स, once again we'll be sending it to you. एंड आंसर शीट बाद में उन्हीं को पहुंचाई जाएगी, दोज हु आर गोइंग टू राइट इट डाउन एंड सेंड द पेपर टू अस, राइट.
and you can check it on your own and revise, do hard work, and thank you once again. So the papers will be reaching you very soon of all the subjects. Thank you very much. If any query, please feel free to give me a call. Thank you.